his picture of Islam. I'm Michelle. My name is Eurasia. I'm from Buddhist. I'm a Roman Catholic. Sister, do you believe that there's one God? Yes. Do you believe Jesus is messenger of God? Yes. Is anyone forcing you to accept Islam? No. Are you doing out of your own free will? Yes, I love Allah. Ashhadu Ashhadu Allah Allah. ilaha ilaha illallah Illallah. wa ashhadu wa ashhadu Anna. Muhammadan. Muhammadan. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी नाजरीन, कैसे हैं आप? ठीक हैं। मुझे उम्मीद है कि आप खैर वाफ़ियत के साथ होंगे और आपका जो रमज़ानुल मुबारक है वो बहुत ही बेहतरीन गुज़र रहा होगा। आप जानते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें दीन इस्लाम अता किया है और ये दीन जो है ये बहुत सी कुर्बानियों के बाद हमारे पास पहुंचा है। ये ऐसे ही नहीं एक दो दिनों की बात है कि हम मुसलमान हो गए, बस इस्लाम हमें मिल गया, बल्कि हमारे असलाफ़ ने, देखें आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कितनी कुर्बानियाँ दी। अपना घर बार छोड़ा, अपने बेटे छोड़े, अपने नवासों को शहीद करवाया। आपके जो सहाबा थे जानिसार, वो जो है उनको बहुत सी तकालीफ़ दी गई। इसके बाद फिर जो है हमारे पास दीन इस्लाम पहुंचा है और अब भी दीन इसी चीज़ का मुतालबा करता है कि दीन ये नहीं है कि हम सिर्फ़ एक जगह पे बैठ जाएं बस हम मुसलमान हो गए अल्लाह खैर सलाह। नहीं, हमने इस दावत को आगे तक पहुंचाना है। तो आज आइए देखते हैं एक ऐसा ही बेहतरीन सा क्लिप डॉक्टर जाकिर नाइक साहब का कि उन्होंने दीन के लिए अपना वतन छोड़कर किसी दूसरे शहर गए हैं और वहाँ पे उन्होंने दीन की तबलीग की है और देखें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको कितनी इज़्ज़त अता की है। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। It is an honor and a pleasure for me to be invited by the Chief Minister of Telangana State. The glorious Quran is the last and final revelation of Allah subhanahu wa ta'ala, of Almighty God, which was revealed to the last and final messenger, Prophet Muhammad, peace be upon him. For becoming a Muslim, you have to believe there is one God. Yeah. You have to believe idol worship is wrong. Now I got it. Thank I got you. it. Do you believe Prophet Muhammad is the messenger of God? Yes. So doing out of your own free will. Yes. Is anyone pressurizing you? No, nobody. Brother, I've said in Arabic and you can repeat it. Okay. Ashhadu Ashhadu Allah Allah ilaha illallah illallah wa ashhadu wa ashhadu anna anna Muhammadan Muhammadan abduhu abduhu wa rasuluhu. wa rasuluhu wa rasuluhu. Warasuhu. Mashallah, become a Muslim. And pray to Allah subhanahu wa ta'ala that He grant you Jannah. On behalf of people here, first let me thank you very much for being on stage for 4 hours. Actually, I'm one of your fan. I am a Christian, and personally to say, you are one of my idols, beside my Chief Minister in Sarawak, Tan Sri Adnan Satim. I as a Dai or I as a Muslim, I have to correct his picture of Islam. I'm Michelle. My name is Eurasia. I'm from Buddhist. I'm a Roman Catholic. Sister, do you believe that there's one God? Yes. Do you believe Jesus is messenger of God? Yes. Is anyone forcing you to accept Islam? No. Are you doing out of your own free will? Yes, I love Allah. Ashhadu Ashhadu Allah Allah. ilaha ilaha illallah Illallah. wa ashhadu wa ashhadu Anna. Muhammadan Muhammadan abduhu Abduhu. wa rasuluhu. Rasuluhu. Wa Rasuluh. MashaAllah, you're a Muslim sister. And Thank you. I pray to Allah subhanahu wa ta'ala. Allah says in Surah Nahl chapter 16 verse 125, Udu ila sabili rabbika bil hikmah wal ma'azat al hasna wajadun billati ahsan. Invite all to the way of thy Lord with the wisdom and beautiful preaching, and argue with them and reason with them
in the ways that are best and most gracious. Allah says, go and argue, but with hikmah and with ma'azat al-hasna. Commonality between Veda, Bible and Quran is Almighty God has got no pratima, has got no image, has got no picture, has got no portrait, has got no statue, has got no idol, has got no sculpture. Correct? Absolutely, yes. Yes. All these scriptures say the last and final messenger to come is Prophet Muhammad, peace be upon him. So do you believe that Prophet Muhammad is the last and final messenger? Oh, absolutely, yes. According to me, you have fulfilled the basic requirement of being a Muslim. Thank you. Brother, would you like to proclaim it in Arabic? I have been waiting this for 24 years. Oh, good. I will say it in Arabic and you can repeat it. Ashhadu Ashhadu Allah Allah ilaha ilaha illallah illallah wa ashhadu wa ashhadu anna anna Muhammadan Muhammadan abduhu abduhu wa rasuluhu. तो जी नाज़रीन, कैसा लगा आपको क्लिप? यकीनन दीन जो है वो कुर्बानी मांगता है, और जब बंदा दीन पे चलता है तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको बेपनाह इज़्ज़त अता करते हैं। और ये इसकी जीती जागती मिसाल है, देख लें आप डॉक्टर जाकिर साहब या और भी जितने भी उलमाए कराम हैं, वो जब दीन पे चलते हैं तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको शोहरत, उनको बुलंदी और उनको रुतबा अता करता है। और इसमें हमारे लिए भी सबक है कि हम भी अगर दीन के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे, वही काम करेंगे जो रब्बुल आलमीन ने हमें कहे हैं, और दीन के मुताबिक अपनी जो है वो दुनिया के काम करेंगे, तो इंशाअल्लाह इसमें हमारी इज़्ज़त होगी, हमारी बरतरी होगी, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें बुलंदियाँ अता करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको दीन पे चलने की तौफीक नसीब फरमाए। शुक्रिया।